सेट। आप लोगों ने कल शाम को ईमेल भेजा था ना? By that time I left office. I'll send you today. ठीक है? We have already traveled in the first paper. We have seen syllabus. We have seen question. We have seen nature. We have seen pattern, trend. Today we'll focus on paper 2. Right? Now you must be feeling that is sir क्या पढ़ा रहे हैं कुछ है नहीं. But let me tell you, this is the most important part in your preparation study. You know what you need to study, what are the trends. ये actually preliminary examination है, मतलब preliminary idea है. जैसे मान लीजिए किसी वार पे जाना है तो आपको पता होना चाहिए कि भाई वार क्या होगा, वहां फिजिकल ज्योग्राफी क्या है, गर्मी है या सर्दी है ना, वहां पे जो लोग हैं हथियार कैसा है, सब कुछ आपको पता. This is that kind of things that we are doing, right? And then you start your training yourself. मान लो कि बहुत सर्दी है उस वार फील्ड में और तुम ऐसे प्रिपेयर कर रहे हो, कभी गर्मी एरिया में प्रिपेयर कर रहे हो. You have to prepare in that way, right? So similarly, so that is the, this stage, and I have told you, you do it also for your GS paper. उनके लिए भी आप करें, ठीक है? 15 दिन, और ये बहुत बड़ा काम है, कुछ काम भी नहीं है और बहुत बड़ा काम है, ठीक है? कुछ भी काम नहीं है, कोई टास्क नहीं है, कोई असाइनमेंट नहीं है ऐसा टेंशन लेने वाला, बहुत बड़ा काम है, राइट? If possible, remember your syllabus as much as possible. Remember your syllabus. समझ में आ रहा है? For example, paper 1, there are in section 1 there are 10 units. You should know what is unit 1, what is unit 2, what is unit 3. ये याद रहना चाहिए, ठीक है? राइट? और जैसे सेक्शन भी है उसमें 11 यूनिट्स है. you should know कि हमें पढ़ना क्या है, क्या क्या पढ़ना है, राइट? So let's see today's the paper 2 here. And in paper 2, if you look at again, there are 2. Let's see first syllabus. In paper 2, first 4 topics are from comparative politics. Right? But if you look at this globalization, we will discuss in also paper 1. Right? For example, I'll talk about neoliberalism. Right? I'll talk about the Washington consensus. Right? I'll talk about how globalization has become, omnipresent everywhere after the collapse of the USSR. Right? China has already opted, liberalization. Right? Market model of development. India had also opened up its economy in 1991, 92. Right? If you look at the Eastern Europe, that has also transformed its economy. Right? So that was the, so primarily we will do in paper 1, but you will do in paper 2. Now, if you look at, there was a responses. For example, in developed country, globalization are always welcomed in the US or European country. But if you look at developing country, have different responses to globalization. Right? Sometimes we call it a cultural imperialism. Right? We call it cultural imperialism or imposition of Western culture. Right? Sometimes it is called Westernization. Isn't it? We are also, so there are different theory regarding the response of developing society towards the globalization. Have you heard about globalization? क्या होता है globalization? किसी वर्ल्ड के लिए ओपन करना. ग्लोबलाइजेशन को क्या है? व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? अगर हम डिफाइन करें ग्लोबलाइजेशन को, क्या है ये? किसी ठीक है. Globalization is a process of interconnectedness and interdependence. Right? Interconnectedness and
interdependence. There is a free flow of trade, commerce, labor, capital, right? Goods and services around the globe, right? The social relations are also becoming so compact, right? So connected or interconnected. Now there is we don't need to go to China to buy Chinese product, or you don't need to go to US to buy US product, right? Or you don't need to go to Pakistan to hear some music of Pakistani music. You be in India, and you can watch the Pakistani movie, music, right? Serial, right? I have watched one serial, that is Dasta, right? It is a Pakistani perspective on partition, right? So आपको वहां पर जाना नहीं है. Now due to globalization, world has become so compact, right? World has become so compact, and look at our everyday practice. Since early morning till the night, we use so many products at the same time, right? And its product is somewhere, for example, this mobile is from China. For example, this is, I don't know the Duke kahan ka hai, but your shoes is from Germany, your jeans is from US, your belt is from Italy, maybe, right? Your watch maybe, somewhere fast track. It's not Indian company. Early in the morning, you use Sensodyne brush or toothpaste like Colgate or Close Up. It's not Indian. Now look at how we are using the global product every day of life, right? Sometimes you are using WhatsApp, Facebook, Twitter. Now it has become X, right? And just connect to the Macron. Just follow the Macron. Macron, the chief president of the France. उसको फॉलो कर लो, उनकी बातें देख लो, उनकी वो क्या कह रहे हैं. You don't need to go to France, right? So globalization is a process. Globalization is a process, right, which has made the world interconnected and interdependent, and there is a free flow of trade, commerce, capital, labor. Everything is a free flow, right? अब आपको बिजनेस करने के लिए अमेरिका नहीं जाना है. अमेरिका में बिजनेस करने के लिए, अमेरिका से बिजनेस, यू बी हियर एंड देन यू डू, फॉर एग्जांपल आपको कोई कोर्स करना है फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, not need to go to Harvard University now. You be stay here, and there are several courses offered by Harvard University or MIT US, right? पता है? There are several courses offered by Oxford University, Harvard University, Science Po, Germany, right? Many university, Berlin University, many university offers courses. ठीक है. गूगल आप मोबाइल निकालो, कोर्सेरा है, EDX है, पता है आपको? नहीं पता? अच्छा, नहीं पता, कोई बात. There are courses you can access. So वहां पर जाने की जरूरत नहीं है. अब क्या है कि look at, there are responses from developed country. Developed मतलब the countries of the global north, right? Sometimes we call the countries of global north. Global north मतलब यूरोपियन कंट्रीज, यूएस. ठीक है. जो मान लो कि जो ग्लोब है ना हमारा, और उसके ऊपर जो कंट्री है उसको ग्लोबल नॉर्थ बोलते हैं. ठीक है. और इसके नीचे जो उसको बोलते हैं हम ग्लोबल साउथ, राइट? जनरली ऑल ग्लोबल नॉर्दर्न कंट्री आर डेवलप्ड कंट्रीज, right? And the global south country are developing countries. ये तो पता है, right? So if you look at global north, developed country have different response to globalization because they get benefit out of it. They get benefit out of it, right? और बोलोगे सर कैसे बेनिफिट मिलता है? एविडेंस दो, कुछ तो बताओ. ऐसे कह देने से नहीं होता है. You have to give evidence, है ना? Now if you look at, there is a report by the UN trade, United Nations Trade Organization, right? And if you look at several million people, $7 million
goes from developing country to developed country. Right? Why is it so? Why is it going money? Because the trade is not, equal exchange between the developing country and developed country. Trade is not unequal. Right? So when we have an unequal relationship, then one would be exploited, definitely. Right? The relationship between based on equality or equal exchange. Right? So अलग-अलग है. So आपको पढ़ना है. Now look at the chart hai. Now look at the politics of representation and participation. Many things I'll teach you the first. Like I'll teach you political parties क्या होता है, pressure groups क्या होता है, social movements क्या होता है, right? वो सब पढ़ेंगे. Right? यहाँ पर थोड़ा सा आपको comparative perspective में पढ़ना है. Like India की political party system क्या है, UK की क्या है, USS क्या नाम है, United Nations, US की क्या है, UK की क्या है, फ्रांस की क्या है, राइट? चाइना में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, मैं फर्स्ट सिस्टम में बता दूंगा. देयर आर मेनी वन पार्टी स्टेट लाइक चाइना, क्यूबा, रशिया. दीज आर द वन पार्टी स्टेट. एनीवे, नाउ लुक एट सोशल मूवमेंट्स पढ़ने हैं अलग अलग कंट्रीज में. ठीक है, लेकिन एनवायरमेंटल मूवमेंट इज अ यूनिवर्सल मूवमेंट, राइट? इट अकर्स in developing country also and developed country also, right? These are called new social movement. For example, feminist movement. You can find feminist movement in India also and in the Western countries also, right? So many things you need to know here. Fine. Now, if you look at second, the state in comparative perspective. Now, if you're first section, we'll talk about a state. We'll talk about theory of state. I'll teach you what are the state in the developed country, how state is in developed country, and what are the state in developing country. Okay? For example, in developing country, some is called overdeveloped state. Suna hai naam? Overdeveloped state. Right? Overdeveloped state is talked about, talked in context of Asia. Like look at India, look at Pakistan, look at Bangladesh. Now, if you look at in this state, if we compare these states with the European state has evolved along with the evolution of society, economy, right? Society जब progress किया, industrialization आया, तो modern state आया, right? But if you look at the society like India, right? The state has been superimposed from top. Britishers came and they actually set up new state institution like bureaucracy, like Supreme Court, or like police, like military, right? They were the modern institutions, right? They were the modern institutions, very modern institutions. But if you look at the society, Indian society, they were still agrarian. They were still agrarian, and people were feudal. People were feudal. Feudal मतलब still believing in the old idea, 7th century. हाँ, जात होता है, हाँ अपने जात में शादी नहीं करना है, हाँ ये कांड करना है, वो कांड करना है, मतलब सी वहां पर जाना है तो पत्रा दिखा के जाना है. Still people believe ना, right? कि आपकी शादी होगी तो वो पत्रा दिखाएंगे. अच्छा देखो अच्छा दिन कब है, फलाना दिन जाएगा तो राहु आ जाएगा, फलाना दिन इधर जाएगा तो केतु आ जाएगा, इधर जाएगा तो शनि आ जाएगा. Huh? Have you seen? Now still, society are, feudal, largely feudal. Right? Largely feudal. I'm not entire societies are feudal. No. Largely feudal. Right? So if we compare state society here, state is not merely developed in comparison to society. State is overdeveloped in the South Asia. South Asian state. अगर हम स्टेट की हमारा जो अगर आपको एयरफोर्स की कंपेयर किया जाए तो हमारा एयरफोर्स का कंपैरिजन फ्रांस से होगा, यूके से होगा, ठीक है, यूएस से भी कर सकते हैं, चाइना से भी कर सकते हैं. मिलिट्री की कंपैरिजन होगी, हम चाइना से कर सकते हैं, यूएस से कर सकते हैं, फ्रांस और ब्रिटेन से कर सकते हैं. नेवल कैपेसिटी की बात होगी, वी हैव लॉट्स ऑफ नेवल कैपेसिटी, राइट? अगर जज सुप्रीम कोर्ट की बात होगी, आवर सुप्रीम कोर्ट इज वन ऑफ द बेस्ट कोर्ट, लेट मी टेल यू.
right? Our Supreme Court can be compared with the US Supreme Court, right? Or Supreme Court of UK, right? वहां के जो सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ के जो जजमेंट है उसको साइट करते कि देखो इंडिया ऐसा करता है, right? Look at the parliament, it's a modern institutions. समझ में आ रहा है? So if you look at the state institutions which is overdeveloped in India, and these states are overdeveloped, yeah, whereas if you look at the economy, right, if you look at the society, which are not developed in comparison to state बहुत overdeveloped है. What the idea? Right? For example, Latin America के context में बोनापार्टिस्ट स्टेट कहा जाता है. सुना है कभी बोनापार्टिस्ट स्टेट? बोनापार्टिस्ट स्टेट नहीं सुना है, कोई बात, सुनाएंगे anyway. So स्टेट को हमें पढ़ना है यहाँ पर. We'll talk about state, right? साउथ अफ्रीका में अलग स्टेट है, right? So of course यहाँ पर स्टेट आपको पहले में भी पढ़ाएंगे, बट यहाँ भी पढ़ाया जाएगा, right? थोड़ा एडिशनल पढ़ाया जाएगा, right? So you know कैरेक्टरिस्टिक एंड चेंजिंग नेचर क्या है स्टेट का, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में भी, right? और सोशलिस्ट सोसाइटी में भी. एडवांस मतलब एडवांस इंडस्ट्रियल कंट्रीज लाइक ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ में, ठीक? पहले में भी बहुत सारा चीज पहले में भी हो जाएगा, इसीलिए पहले जो पहला पेपर है उसमें बहुत टाइम लगता है, क्योंकि हाँ नाउ जैसे कॉम्पेटिटिव पॉलिटिक्स क्या है, हम क्यों कंपेयर करते हैं, है ना, इसका क्या फायदा है कॉम्पेटिटिव पॉलिटिक्स का, इसका नेचर क्या है कॉम्पेटिटिव पॉलिटिक्स का, स्कोप क्या है, अलग अलग पर्सपेक्टिव क्या है पॉलिटिकल किसी भी पॉलिटिक्स को पढ़ने का, ये भी हम आपको मैक्सिमम चीज में से जो है वो मेजर अप्रोचेस वो हम पहले पेपर में पढ़ाते थे, राइट? जैसे सिस्टम अप्रोच पढ़ा होगा आप लोगों ने, इनपुट आउटपुट अप्रोच डेविड ईस्टन वाला, हाँ ठीक है, पढ़ा होगा, राइट? फिर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल अप्रोच पढ़ा होगा, सुना होगा, राइट? फिर पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच पढ़ा होगा. तो ये सब उसी में कर लेंगे, पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी पर्सपेक्टिव, ठीक है? लिमिटेशंस और नेचर आपको यहां कर देंगे, इसीलिए पेपर 2 में कम टाइम लगता है, ठीक है? नाउ ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4 टॉपिक हमारा क्या है कॉम्पेटिटिव पॉलिटिक्स का, ठीक? अब देखो यहां से हमारा आईआर शुरू होता है और यहां से लेके पूरा का पूरा लास्ट तक इंटरनेशनल रिलेशन भी है, इंटरनेशनल रिलेशन ही है, राइट? सेकेंड पेपर के जो सेकेंड पार्ट है, यू नो द सेक्शन बी इज ऑल्सो अबाउट इंटररिलेशन, right? IR, huh? It's a foreign policy is also about IR. It's about IR, na? Foreign policy is a part of IR, right? ठीक है? So look at the what you need to study. Now, if you look at here, approaches to a study international relation, right? Approaches. What are the approaches? What are the method to study international relation? IR. Now, let me tell you, IR is a very modern and young discipline. Very young discipline. Very enthusiastic. If you go through IR, very interesting. So very interesting and very, you know, you have to see so many facts you have to remember. ठीक है? IR में. But वो facts है, यहाँ पर हमें perspective पढ़ना है. For example, there are idealist perspective, like Woodrow Wilson. Right? Woodrow Wilson believed in some, you know, some idea. Right? That is, for example, he talked about institutions. Right? He talked about like League of Nations was the product of, you know, the Woodrow Wilson's thought. Right? Woodrow Wilson had given 14 formula. And out of 14 formula, after World War I, one formula was League of Nations. And later on, that was transformed into United Nations. Right? And he also talked about if we make the law, international law, and if we observe, every country observe the law, मान लीजिए कानून बन जाए, हम कैसे बिहेव करेंगे और उसको सब माने तो झगड़ा नहीं होगा ना, राइट? अगर कोई भी झगड़ा होने की पॉसिबिलिटी है तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है ही, उस पे आके बात कर लीजिए, अपना रिजॉल्व कर लीजिए, राइट?
ठीक है. अब if you look like Jawaharlal Nehru was also an idealist, philosopher. He also believed in United Nations Charter, right? United Nations law पे still India, have some, some aspects of idealism in its foreign policy, right? हम बोलते हैं आ जाओ यूनाइटेड नेशंस पे आ जाओ, वार मत करो, हाँ आके बातें करो, दिस ऑल आर डायलॉग करो, लॉ देखो, इंटरनेशनल लॉ वायलेट मत करो, राइट? रिस्पेक्ट ईच अदर्स म्यूचुअल. होता नहीं है ऐसा, राइट? ये बड़ा कहने में अच्छा लगता है कि एक दूसरे को रिस्पेक्ट करो, राइट? पर रिस्पेक्ट कैसे करोगे जब चीजें ऐसी है, राइट? और चीजें कैसी है ये आपको रियलिस्ट बताएगा. चीजें कैसी है, क्यों वार होता है, वार क्यों इनविटेबल है, why war is a, you cannot avoid war. War is inevitable, right? You can pause war, right? Through the balance of power. मान लीजिए दोनों में अब मान लीजिए ये गन लेके आ गया एक दिन, क्या होगा? हम दोनों तो भाग जाएंगे, भाई ये गन लेके आ गया, या हम भी कुछ लेके आएंगे, होगा ना? ये तो गन लेके आएंगे तो सिक्योरिटी थ्रेट होगा. और ये क्यों लाएंगे? क्योंकि यहाँ पर कोई पकड़ने वाला नहीं है. इंटरनेशनल कोई कंट्री है, किसी कंट्री के अंदर लॉ एंड ऑर्डर है. मान लीजिए इंटरनेशनल रिलेशन तो एनार्किक है ना, मान लीजिए बहुत सारी कंट्री है, कोई किसी कंट्री को रोकने वाला नहीं है. अब चाइना कल क्या करेगा, कोई रोकने वाला नहीं. इंडिया क्या करेगा, कोई रोकने वाला नहीं. तो एक कंट्री के अंदर हायरार्की है, कंट्री के अंदर सरकार है, और देयर आर डिफरेंट लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट. सो देयर इज अ हायरार्की विद इन अ कंट्री, right? But beyond a country, the international system is anarchic. बड़ा anarchic है. मान लो यूक्रेन पे अटैक कर दिया रशिया ने, राइट? अब यूपी अटैक करेगा बिहार पे? नहीं कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां पर एक इंडिया में हायरार्की है, एक कंट्री के अंदर हायरार्की होती है. या कैलिफोर्निया अटैक कर पाएगा न्यूयॉर्क पे? नहीं कर पाएगा. एक कंट्री के अंदर एनार्की होती है. बट कंट्री के बियॉन्ड जब जाएंगे तो इंटरनेशनल सिस्टम है. वो एक नेशनल सिस्टम है जहां पर हायरार्की होती है, एक इंटरनेशनल सिस्टम है जहां पर एनार्की होती है. और जब एनार्की मतलब chaos, right? Disorder, right? Where we follow मत्स्य न्याय. मत्स्य न्याय मतलब बड़ी मछली दूसरे मछली को खा जाती है, यही तो मत्स्य न्याय है. समंदर में कोई लॉ थोड़ी है, एक बड़ी मछली दूसरे मछली को खा गई. जंगल में लॉ थोड़ी है, राइट? बट जब उसी जंगल को हम जू बना ले तो व्हाट इज जू? हैव यू बीन टू जू? जू में क्या होता है, सबका एरिया फिक्स कर दिया जाता है. तो जू में तो ऐसी लड़ाई नहीं होती ना. फिर वही आइडियलिस्ट बात करते हैं, इसको जू नहीं बनाया जा सकता क्या? जू बना दो. जू कैसे बनाओगे? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लॉ बना करके सबको जू बना दो. बट ये कहते कि आप जू नहीं बना सकते, आप नहीं बना सकते, हम जू नहीं बना सकते. हाँ, वार को पॉज हो सकता है, राइट? बैलेंस ऑफ पावर हो गया, पॉज हो गया, राइट? फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि यूएस और यूएसएसआर में लड़ाई नहीं होती, क्योंकि दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन है, राइट? बैलेंस ऑफ पावर. इंडिया और पाकिस्तान में वार बहुत कम संभावना है, बिकॉज बोथ पोजेस nuclear weapon. So realists talked about several characteristics of the international relation that you will study. Now Marxist has different understanding of international relation, right? इनका जो interpretation है international relation, that is based on the class, right? And Marxists always show how some kind of country have exploited another country, right? How this one country, started colonization, other country also started colonization, third country also started colonization, and this competition grew. As the competition grew, there was a First World War. Why First World War? It was a competitive groups who fought among themselves. India World War नहीं लड़ा, First World War, right? किसने World War लड़ा? The imperial power fought World War I among themselves.
Why is it so? To occupy the certain territory. Look at Second World War. What that was the same. It was a repetition of the World War One in a greater extent. Right? E.H. कार इन्होंने एक किताब लिखी है. E.H. कार का नाम सुने हो? E.H. कार ने एक लिखी है 20 years crisis. Right? ठीक है? कि और 1919 to 1939. This was 20 years peace. कोई कहता है पीस था, कोई कहता है पीस नहीं था, एक क्राइसिस था. Second World War was a repetition. Right? It was a repetition. It was a continuation of the First World War. It was nothing called peace. Right? It was a 20 years crisis. Right? Look at Italy attacked Abyssinia. Germany started colonizing the other country. Right? Right? UK and USA started appeasing, Hitler and Mussolini. Anyway, so very interesting. Right? Marxist analysis is very interesting. Now about functionalist approach is actually part of liberal approach. Idealist है, idealist है, यहाँ पर एक word नहीं है. Liberal approach, right? Liberal approach का part है ये functional system and system theory, right? इसमें और भी पढ़ाएंगे interdependence theory, complex interdependence, neo institutional theory, right? There are many theory which is not mentioned in the syllabus but you will be taught. ठीक है? And then the key concepts of IR. Key concept मतलब क्या है? नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है, पावर का मतलब क्या होता है. हाँ, तो पावर तो पॉलिटिकल थ्योरी में आपको बताएंगे पावर का मतलब क्या होता है, बट यहां पर आप अलग नोशन में पावर पढ़ेंगे. फॉर एग्जांपल यहां पर पढ़ेंगे आप नेशनल पावर. किसी कंट्री का नेशनल पावर क्या हो सकता है? उसकी ज्योग्राफी, उसका रिसोर्सेस, पॉपुलेशन या नेचुरल रिसोर्सेस, मिलिट्री यस, और economy, yes. Leadership, yeah, leadership, yes. Look at how United Nations has produced strong leaders who, actually put the world in particular order. नहीं, yeah. So leadership is also national power. फिर आप पढ़ेंगे soft power क्या होता है. सुना है soft power क्या होता है? Culture और yoga. Okay, yeah, you're right. Culture, yoga और tourism. Okay, more. हाँ, मूवीज. या ये करता क्या है? ये सब चीज, ये सब तक आपने एग्जाम्पल दिया. कल्चर, मूवी, योगा, करता क्या है? हाउ इज इन्फ्लुएंस करता है. यस, सॉफ्ट पावर इज अ पावर ऑफ अट्रैक्शन. सॉफ्ट पावर इज अ पावर ऑफ attraction. It attracts other, and others start to following it. Now, if you look at, for example, like culture is a part of, religion is a part of, soft power, right? Culture is a part of soft power, right? Media is a part of soft power, media, right? Then, material goods are also part of soft power. Material goods. Nahin? Look at, we are, how the West has used soft power. नहीं, जो ग्लोबलाइजेशन की बात हम कर रहे हैं, राइट? सो देन हार्ड पावर, पता है हार्ड पावर क्या होता है? क्या होता है? सॉफ्ट पावर इज ऑल्सो थ्रेट. सॉफ्ट पावर इज नॉट समथिंग, कि ऐसा थ्रेट नहीं होता. सॉफ्ट पावर इज ऑल्सो थ्रेट, बट कंसेंट से. आपको भी मर्जी है, ठीक है, हम करेंगे, हम कोको कोला पिएंगे, पीजिए, बट कोको कोला पीने से हमारा पैसा उधर चला जाता है. हाँ, हम भी ठीक है, चलो ले लो, कोई बात नहीं, हमने कोको कोला तो पिलाया. लुक एट, राइट? Hard power is a nuclear, power of coercion. Power of coercion or force, right? Physical force. डंडे से मारना किसी को. That is called hard power, right? What is smart power? ना है smart power? Combination of both. Yes, very good. Combination of both. बहुत कुछ जानते हैं आप लोग. अच्छा, what is sharp power? अच्छा, sharp power is used by Russia and China.
right? They have formed several news room, right, and providing free access to the people of worldwide how China had been misrepresented and how China is good. Am I making sense? चाइना ये बहुत सारा जो न्यूज रूम है ना खोल के रखा है. हाँ, फेक न्यूज क्या कहेंगे, वो अपना अपनी कहानी है, स्टोरी है चाइना की, राइट. और वो पूरी दुनिया को बताता है. आप चाइनीज टेलीविजन खोलिए, आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं, आप सीधा आप यू कैन एक्सेस, राइट. और रशिया, और वो बताएगा कि रशिया कितना अच्छा है, क्या कर रहा है, क्या बढ़िया कर रहा है. अमेरिका भला नहीं. हाँ, कुछ लोग भले ही बदनाम कर रहे हैं रशिया चाइना को, ये वो. हाँ, चाइना ये है, चाइना वो है, चाइना आपकी प्रगति करता है, चाइना ऐसे करता है, चाइना ने ये किया, चाइना ने अपनी मियां मुंह मिट्ठू करना, राइट. तो किसी ने कहा कि ये शार्प पावर है. चलो, सो यही है क्योंकि आपको अलग अलग पढ़ना है. हाँ, जैसे सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी का क्या मतलब है, राइट. सिक्योरिटी कितने तरीके के होते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, राइट. ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, राइट. फिर आप पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पावर क्या होता है, बीओपी. हाँ, सुना है बीओपी, बैलेंस ऑफ पावर, राइट. वो पढ़ेंगे. देन विल टॉक अबाउट डेटरेंस. सुना है डेटरेंस, क्या होता है डेटरेंस? नहीं, थ्रेट इज नॉट अ डेटरेंस. थ्रेट इज नॉट अ डेटरेंस. डराना तो थ्रेट हो गया ना. किसी को डराना इज नॉट अ डेटरेंस, किसी को डराना इज अ थ्रेट. सुना है डेटरेंस? Capacity to produce, right, an environment of safety. फॉर एग्जाम्पल, आप दो बहन हो और एक बहन ने आपको खिंचाया, मतलब आपको टीज किया, यू स्लैप्ड her, टाइट स्लैप्ड. नाउ द नेक्स्ट टाइम your sister will not tease you, right? But how long she will not tease you? Until your deterrence is maintained, right? You have done something which has produced some environment of your safety. समझ में आया? ठीक है. ऐसा फॉर एग्जाम्पल, लेट मी, आप एग्जाम्पल क्या करोगे, बोलोगे कि सर यूएस ने न्यूक्लियर वेपन क्रिएट कर लिया, राइट. यूएसएसआर ने भी कर लिया, राइट. दोनों को पता है भाई, वी कांट अटैक. इफ वी अटैक देयर विल बी अनप्रेसिडेंटेड डिस्ट्रक्शन. एक दूसरे को, और ये भी जानते हैं कि मैं करूंगा तो वो भी कर देगा. ऐसा नहीं कि मैं बच जाऊंगा, मैं मार के चुपचाप भाग जाऊंगा, नहीं. मैं अगर मारूंगा तो वो भी ऐसा मारेगा कि एक दूसरे को जानते. ये डेटरेंस है, ये जानना कि भाई मैं इसको कुछ ना करूं, नहीं तो ये पलट के, हाँ, पलट के मारेगी. Deterrence. That capacity you have to, one has to produce in deterrence. Got the idea? चलो, सो डेटरेंस पढ़ेंगे. ट्रांसनेशनल एक्टर क्या होता है, ट्रांसनेशनल एक्टर पढ़ेंगे. ट्रांसनेशनल एक्टर के बारे में किसको बोलते हैं? टीएनसीज. दिस इज कॉल्ड टीएनसीज, ट्रांसनेशनल एक्टर्स. Yeah, organization which work in several countries. That is called transnational company. Like Amazon is a transnational company, right? Any multinational company is called transnational. Then collective security, then world capitalist economy, globalization में हो जाएगा, right? It will cover. Now look at the next. Here you need to talk about, the world after World War II. No, how the world was after the World War II. For example, if you look at, there was a, rise of superpower. Right? So rise of superpower, Cold War, arms race between the two powers. Right? Then there was so many agreement for arms. Right? SALT 1, SALT 2, START 1, START 2.
right? Then nuclear threat, right? Nuclear proliferation, NPT, non-nuclear proliferation treaty, right? ये सब पढ़ना है. Then you'll talk about the non-alignment movement that actually the developing country had started, right? उसका aims क्या था, achievement क्या था. Then you'll come to the collapse of the USSR, right? Why USSR has collapsed, right? What happened after the USSR, collapse? There is a unipolar world. America has become hegemonic power. America has become hegemonic power, right? Then, then when it has become hegemonic power, then what was the, relevance of NAM, right? 2019 के बाद NAM का कोई भी meeting नहीं हुआ, right? Now, last 5 years, there is no single meeting of NAM. What is the relevance of NAM? Anyway, so we'll talk about, then you'll talk, you will discuss the international economic system. That's a very important point. International economic system. And if you look at the Bretton Woods system had given birth to twins. क्या नाम था twins का? Yeah, World Bank and इस दो ट्विंस को दिया था, ठीक है? ये 1945 में हुआ था. 1948 में हुआ था जो आप बोल रहे हैं, और 45 में, जो कि अमेरिका को मंजूर नहीं था, आईटीओ, राइट? जब आईटीओ मंजूर नहीं था तो क्या हुआ? गैट बना, राइट? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ. ये इंटरनेशनल रूल्स था जिसके थ्रू पूरे जो इंटरनेशनल ट्रेड हो रहे थे वो होने थे. इट वॉज लिबरल इन इट्स अप्रोच. और यही गैट 1995 में आके WTO बन जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है. आज वर्ल्ड आप पढ़ेंगे, WTO में बहुत सारे नेगोशिएशंस हैं. उसमें से एक नेगोशिएशंस है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर. पढ़ा है कभी? राइट. वहां पर ये नेगोशिएशंस ये हैं कि जो डेवलपिंग कंट्री है या कोई भी कंट्री है, अपने फार्मर्स को सब्सिडीज नहीं दे सकते. R&D पे दे सकते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे दे सकते हो, लेकिन सब्सिडी नहीं दे सकते, राइट? अभी जो MSP हो रहा है डिबेट, राइट, मतलब डिमांड कर रहे हैं और सरकार नहीं दे रही है, तो ऐसा नहीं कि सरकार और फार्मर्स की बात है, ये इंटरनेशनल लेवल की बात है. चीजें कहां से इन्फ्लुएंस हो रही है. However, India is exempted from that box called amber box. पढ़ेंगे, यहाँ पर 3 बॉक्स होता है, राइट? एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और एक और बॉक्स होता है. WTO नेगोशिएशंस बहुत सारे हैं. सर्विसेज के ऊपर भी है, ट्रेड के ऊपर भी है, एग्रीकल्चर के ऊपर भी है, राइट? सर्विसेज के ऊपर है, राइट? तो WTO इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? हाँ, सोशलिस्ट इकोनॉमीज एंड द CMEA, काउंसिल फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस, ये USSR ने बनाया था. इट हैज बिकम obsolete now because it has collapsed altogether. Now if you look at third world has started demanding new international economic order, right? The third world has started, इसको बोलते हैं न्यू. सुना है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर? क्या है ये? When the world started, the developing world started demanding about new. कब किया था? Around 1970s, right? चलो, क्यों किया था? Because the international trade was very much unequal between the developing countries and developed country, right? And United Nations, trade organization have shown that there are money, the billions of dollars every year, drained from the developing country to the developed country. And why is it so? Because the trade norms, because the existing economic order, which was in favor of the developed country. And if you look at then what happened, the third world country किसको बोलते हैं?
ग्लोबल साउथ को, यस यू आर राइट, ग्लोबल साउथ को थर्ड वर्ल्ड कंट्री बोलते हैं, ठीक है। अच्छा फर्स्ट वर्ल्ड किसको बोलते हैं? डेवलप्ड कंट्रीज को। अच्छा सेकंड वर्ल्ड किसको बोलते हैं? यूएसएसआर के साथ जो भी सोशलिस्ट वर्ल्ड थे उसको सेकंड वर्ल्ड बोलते हैं। अच्छा फोर्थ वर्ल्ड किसको बोलते हैं? अभी व्हाट अबाउट फोर्थ वर्ल्ड? थर्ड वर्ल्ड तक सुना है। अच्छा फोर्थ वर्ल्ड बोलते हैं कि there are people worldwide who have been excluded from the process of globalization. Now look at the globalization. It has actually, it every country, right? Now every country are under the, circumference of globalization, है ना? But if it's not that globalization has given equal opportunity to all. There are people all around the world, in US also, they have been remain excluded from the global process, globalization, right? And they have been deprived. They live on pavement. They live on pavement, slums, right? And you can find that kind of world everywhere. In London, in New York, India में तो बहुत ज़्यादा है, right? So that kind of world, right, is called fourth world. समझ में आया? Fourth world a specific country नहीं है, it is a global phenomenon. It is a global phenomenon. समझ में आया? ठीक है, किसी स्कॉलर ने कहा है. Anyway, so now then you'll talk about United Nations. Now look at the United Nations are failing, right? For example, if you look at the Palestine and Israel war, no one was hearing, कोई नहीं सुन रहा है United Nations का, right? For example, if you talk about recently United Nations International Court of Justice, ICJ, had given a judgment in favor of Palestine, right? South Africa, made a complaint in ICJ, International Court of Justice. सुना है ना? UN का बहुत सारा एजेंसी है, एजेंसीज UN के, UNGA सुना है ना? सिक्योरिटी काउंसिल सुना है ना? राइट? उसी तरह ICJ है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, राइट? यहां पर कौन गया? अफ्रीका गया मामला को लेकर के. कौन? साउथ अफ्रीका. पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में, राइट? साउथ अफ्रीका मामला को लेके गया कि ये जो इजराइल है ये जेनोसाइड कर रहा है फिलिस्तीन में, राइट? वो भी गया कि मैं नहीं कर रहा हूं. फिर इन दोनों ने फैसला सुनाया और उनको बोला कि आप जेनोसाइड नहीं कर सकते, स्टॉप इट, ठीक है? फिर उसके बाद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि nobody can stop us until we get victory, right, over Hamas. So on the name of Hamas, Israel is doing everything. Now look at the few अगर आप ट्रेस कर रहे हैं इजराइल, और you are reading political science, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, right? I'll give 10 minutes on the newspaper. क्या पढ़ना है आपको, क्या नहीं पढ़ना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, राइट? अब देखोगे कि अगर आप ट्रेस कर रहे हो इजराइल और फिलिस्तीन का वार, रिसेंटली इजराइल हैड अटैक्ड ऑन हॉस्पिटल्स आल्सो, राइट? नॉट रिसेंटली, बहुत बार अटैक किया है, एंड सो मेनी डेड बॉडीज, in absence of electricity, in absence of medicine, in absence of essential equipments, right? Water also, right? Now Israel has threatened that we are not going to stop even during the Ramadan, right? Even see, this is an international crisis. This is an international crisis, right? Anyway, so of course we'll talk about United Nations. इसका रोल क्या उसने देखा था? सपना, इनविसेज मतलब एक होता है ना बचपन में सपना देखना कि मैं ऐसा करूंगा, इनविसेज रोल मतलब यही होता है. Like what was the actually objective, what was the goal of United Nations, what was the envisaged role, and what is the actual record, what is the actual record of United Nations, right? Practical क्या है उसकी लाइफ में, right? So we'll talk about then a specialized agency. There are many specialized agencies, right? Agencies तो ये organs के, there are agencies. Like if you look at UNESCO is one of the agency, WHO is one of the agency. Huh?
There are approximately 10, 10 specialized agency of United Nations Development Program, UNDP, right? UNDP का सुना है ना, जो HDI निकालती है, Human Development Index निकालती है. Anyway, so वो पढ़ना है. हाँ, यूनाइटेड नेशंस के रिफॉर्म के बारे में बहुत बात हो रही है, right? किसी, especially the Security Council, right? There are many countries who are actually claiming for the membership or expanding the United Nations Security Council. उसकी बात होगी. Yeah, India is also part of that. Now then, regionalization of world politics. Now regionalization of world politics, if you look at WW2 thereafter, many countries come together, right? And in that case, European country was very active. Now look at Europe में France or Germany, they fought each other. They fought each other several wars in the last 2 centuries. Several wars. Since, Bismarck. Bismarck? Ottoman Bismarck. He was a, chancellor of Prussia. That time there was no Germany. Right? And he fought, with France. Right? And then there was a, unification of Germany. Since then, Germany had fought several wars with France. Right? World War II के लड़ने के बाद उनको दोनों को समझ में आ गया, war is not a solution. War will lead you nowhere except destructions, right? And misery, right? Misery किसको रहता है? जो छूट जाता है, जो मर गया तो मर गया. During war, जो मर गया वो तो मर गया, वो तो खत्म. Then who are the real victim of the war? Women, children. Look at their condition, right? And they remain in very much miserable condition, right? Very much miserable condition. नहीं, right? So they thought कि नहीं, अब ऐसा नहीं करेंगे. Let's have cooperation. ये politicians को दूर रखो, right? And they started, organization. Now, later on, it has become EU. So that was the first model of, regionalization. In a particular region, countries come together and formed an organization. Why? To cooperate and coordinate in several fields. In science and technology, in agriculture, in education, right? In industry, in innovations, right? In energy. Got the idea? Look at the European Union is that form. Now European Union has expanded beyond it. Now you have European Parliament. You have European Union government, right? There is a European Union Common Security Agreement. No country can attack European Union, right? Now there is a new, if you look at the Ukraine would be given the membership of the EU. मिलेगा उसको, ठीक है? और रशिया नहीं चाहता उसको ईयू का मिले. अगर ईयू का मिलेगा तो वो अटैक नहीं कर पाएगा, नहीं तो सारी यूरोपियन यूनियन कंट्री रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा उनको, ठीक है? बट साइड से तो बैक से तो दे ही रहे सारे. All European Union countries are actually helping Ukraine from backside. In Russia also, US also. Otherwise, Ukraine would have been, fell down very early. Right? Ukraine is sustaining because of the back support it gets from US or European country. Right? Anyway, so that was the first regionalization, regional organization at international level. Now, after there was a SAFTA. Have you heard about NAFTA? सुना है क्या NAFTA? North Atlantic Free Trade Organization. It was an organization between Mexico, Canada, and US. Right? Then you have ASEAN. Yeah, it was an organization among the South Asian countries. You have also SAARC. Right? ये पूरा फेल हो गया अब तो. SAARC गया. Right? But these are the old. Now, later on, if you look at, there is a BIMSTEC. Have you heard about BIMSTEC? Right? So these are the, BIMSTEC is the alternative organization than the SAARC, because SAARC has failed totally because of the perennial conflict between India and Pakistan.
हम चुप ही नहीं होते. कुछ क्या मिल रहा है देखो. I don't know, war mongering, lead nothing. Let me tell you, war mongering and war leads nothing except destruction. नहीं. अब देखो war, मुझे कौन सी कंट्री war से ऐसा हो गया, right? But if we cooperate, lots of employment generation will be there in South Asia, right? आपको पता है कि पाकिस्तान को बांग्लादेश को सामान भेजना है 30 दिन लगता है. It takes 30 days to send goods, from Pakistan to Bangladesh. If we make a freight corridor, right? If we develop freight corridor in South Asia, right? It will take 5 days from Pakistan to Bangladesh to reach any good. खामखा ऐसे ही पाले पड़े हैं. रंजिश, रंजिश means गुस्सा जानते हो हिंदी में, right? और मतलब एंग्री कह दो इंग्लिश में, या very dissatisfied, angry, right? Revenge type. We'll take revenge. पता नहीं किस बात का revenge. Perhaps partition was the biggest gamble. नहीं, partition was the biggest gamble. We are unable to forget it, right? And same is that side, right? Partition, उनको लगता है कि मेरे साथ injustice हो गया, और हमारे कंट्री के लीडर को लगता है ऑर्गेनाइजेशन में हमारे साथ इनजस्टिस हो गया, हमको एक साथ रहना चाहिए था, हम टूट गए. उनको लगता है कि हमको ज्यादा पार्ट मिलना चाहिए था, ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए था, हमको कम मिला, हमारे साथ अन्याय है. कश्मीर उधर चला गया. पंजाब के कुछ पार्ट जो मुस्लिम डोमिनेटेड इंडिया पार्ट थे वो इंडिया में आया था, पता है आपको? ठीक है, जिसमें होशियारपुर था, राइट? वो उनको लगता है कि ये तो गड़बड़ हुआ, पार्टीशन गड़बड़ था. बट वो जो पार्टीशन है ना, एक ऐसा भूत पिचास है कि वो हाउंड करता है. आपको पता है भूत पिचास, राइट? भूत, राइट? तो उसी तरह ये, दिस इज ए स्पेक्टर. द पार्टीशन वाज ए स्पेक्टर that is haunting India-Pakistan relationship, right? It is haunting it. Anyway, अच्छा, our पास time कम है. Now look at then. So got the idea, the regionalization of world politics. समझ में आया कि क्या पढ़ना है यहाँ पर, right? कि किस तरह international level पे organization आए, right? So many group came together, right? Many, in a particular region, many countries come together to form a group for cooperation, coordination, right? For people to people contact. Now look at, if you are in Germany, you don't need to visa to go to France. You can just go and work in France. समझ में आया, right? यहाँ मैं देखो इंडिया में क्या दिक्कत है. If you stay in Calcutta, you can't go to Dhaka. कलकत्ता और ढाका के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है. And if you are living in Amritsar and if you want to go to Lahore, बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे. You can't go, right? If someone is living in Lahore, they can't come to Amritsar, right? वो चीज हटा लिया यू ने. Now people understood that war, this mongering, would lead nowhere, right? We have to cooperate. We have to produce love. We have to do something, right? For example, many things, can bring India, South Asian country together. Many things. For example, let's talk about food. Talk about the food, right? One of the things that human being love, that is food. अच्छी खाना सबको अच्छा लगता है. And look at the food from the Pakistan to India to Bangladesh. They are homogeneous. We all eat chawal, roti, right? Chicken, fish, dal, है ना? Saag. Look at, we speak same language, right? There is a common language that we speak, Hindi, Urdu, right? In this region, right? Although there are different regions, different language, right? For example, Tamil Nadu people speak Tamil. In Punjab, people speak Punjabi, right? But anyway, तो अलग बात है, वो हो नहीं सकता. South Asian country cannot. It will be, but our generation may not
witness it. Anyway, now look at, there are some global concerns. Now, the global concerns are many, right? And but few global concerns that we have to discuss. One is democracy, right? Democracy is on decline worldwide, right? Democracy is on decline worldwide, right? It happening now. For example, अगर बताओगे तो when Trump came to power, right? He started, infiltrating very much unaccountable people, right? He tried to capture, capital. He tried to manipulate the vote, election vote. Now, if you talk about Netherlands, which elected a president, which is very much Islamophobic. Islamophobic means, produce fears from Islam. There is a worldwide Islamophobia, right? Now, if you talk about another country like Argentina, recently in December, Argentina elected its president, who call himself as an anarcho-capitalist, right? There are many countries. Look at India. There are many organizations worldwide which reported, right, that there is a democracy or decline of democracy in India. There is a decline of democracy in India. India reduced to electoral autocracy, right? There are many organizations which measures democracy. Okay? So, and for example, बोलोगे से क्या exam कुछ तो evidence दो. 27,000 civil society had not been given renewal certificate. They had been closed, right? Civil society groups. There are many civil society groups whose FCRA means the Financial Regulation Contribution Act. This law regulates the foreign contribution. Many civil society group actually get foreign contribution. उनको फॉरेन से पैसा आता है काम करने के लिए, right? उनको ही बैन कर दिया. 19,000 such organizations are there. Now this is a weakening of democracy, right? Look at many people have been jailed, like many journalists have been jailed, no bail, right? There are some law, for example, Prevention of Money Laundering Act. Have you heard about it? Prevention of Money Laundering Act? नहीं सुना है? अरे ईडी जो इतना लोगों को बंद कर रहा है, ईडी के बारे में सुना है? Enforcement Directorate इतने लोगों को बंद कर रहा है, कौन से लॉ पे? Which law empowers ED? Money Laundering Act. That is called Prevention of Money Laundering Act. This is very undemocratic law. Okay? Anyway, so after democracy, there is human rights issues, environment, gender justice, terrorism, right? And nuclear proliferation. So these are the 11 units. Very interesting, right? Teacher has to make less effort, you have to make more. ठीक है? In this unit. फर्स्ट पेपर में तो टीचर को ज्यादा एफर्ट बनाना पड़ेगा, आपको भी करना पड़ेगा. ठीक है? यहाँ पर बहुत आराम से हो जाता है, स्मूथली हो जाता है. Now, look at the question. You can find question C. Discuss main limitations of comparative method to the study of political science. Right? So basically talking about the limitations of the comparative method. Right? Then if you look at the political economy approach, देखना. Right? Subject matter of comparative politics. Limitations पूछ रहा है यहाँ पर भी. ठीक है? Now look at significance of comparative method. Look at the nature of comparative politics. ठीक है? Explain the political sociological approach, the Marxist aspects of political economy approach. Look at the major approaches of comparative politics. Major approaches क्या है? 10 मार्क्स का है, 2 लाइन सबके बारे में लिखना है. 2 लाइन, 4 लाइन. So not like university examination. You have to fill a lot, right? Then look at Davidson system approach. समझ में आया? 10 अप्रोच है, सबके बारे में 200-250 से ज्यादा नहीं लिखवाऊंगा. Right? Our notes should be very precise. Very precise.
you know, on each subtopic, I will, dictate you, or you'll get notes not more than 250 or 300 words, maximum 500 words. ठीक है, so that your study should be focused on, उसी को पढ़ना है बार बार, right? Better rather than reading some मोटा सा चौड़ा लंबा चौड़ा किताब नहीं पढ़ना है, लंबा चौड़ा उसी को बात का बतंगर, हैव यू हर्ड अबाउट दिस, बात का बतंगर बनाना, तो बात का बतंगर बना के वो लिखते हैं, आपकी बात है, राइट? व्हाट आइडिया? वेरी प्रिसाइजली नोट्स हैड बीन प्रिपेयर्ड, राइट? बट लोगों को बात का बतंगर अच्छा लगता है, यू नो, लोगों को मजा आता है कि पूरा आगे पीछे दाएं बाएं ये वो चौदह तरह, यू हैव टू बी फोकस, राइट? ना लुक, स्टेट में कितना सवाल आया है, 21 में, 18 में, देखो 16 में, देखो गैप आ रहा है, ठीक है? तो थोड़ा सा ये मैं भेज दूंगा, आप थोड़ा चेक करिएगा। अप्रोचेस में हर साल क्वेश्चन आते हैं, हर साल दो क्वेश्चन आते हैं, हर साल एक तो पक्का आता है। अब देखो ना, 22 में 2, 21 में 2, राइट? 20 में 2, 19 में 2, 18 में 1 आया था, 17 में आया था, 16 में 2, ठीक है? 14 में 2, 15 में 1 ही आया था, 15 में 2 आया, 15 में 2 आया था, यस, लुक एट 14 में 2 आया था, राइट? सो दो क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये तो, राइट? ठीक है? और फिर 2 पे आप ध्यान लगाना कि पूछ क्या रहा है, क्योंकि आपके सिलेबस में क्या क्या आएगा वो है, राइट? तो वो थोड़ा सा ध्यान लगाना, राइट? I'll tell you also mind map भेजूंगा, पढ़िएगा, उसके बाद देखिएगा। माइंड मैप इज सिलेबस ऑफ इन डिटेल्स, लिटिल अ बिट डिटेल्स, सिलेबस जो है उसी को थोड़ा डिटेल कर दिया है, दैट इज माइंड मैप। माइंड मैप मतलब दिमाग में होना चाहिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है, राइट? दैट आई विल सेंड यू। नाउ लुक एट ग्लोबलाइजेशन, वही ग्लोबलाइजेशन पढ़ना है। सवाल देखिए, 22 में 1 आया है, 20 में 1 आया है, 17 में 1 आया है, तो आप जान सकते हैं कि देयर आर गैप होता है, राइट? उससे पहले 15 में 2 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है? Now look at approaches to study of international relations, idealist. Now look at question comes from this section each year, right? देखो 22 में 2 आया है रियलिस्ट अप्रोच से, राइट? उसके बाद अच्छा वो अप्रोच नहीं था, वो था रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन था, यस, राइट? Now look at अप्रोचेस से सवाल आते हैं, देखिए 21 में आया है, 22 में 2 आया है आइडियलिज्म से, सॉरी रियलिज्म से, 20 में 1 क्वेश्चन आया है, 21 में इधर से आया है, राइट? 21 में 2 क्वेश्चन आए हैं, एक इधर से एक इधर से, राइट? 18 में इधर से आया है, ऊपर से भी है, 18 से इधर से भी आया है, राइट? सो देयर आर डिफरेंट अप्रोचेस जहां पर से सवाल आते हैं, पक्का आते हैं इसमें। मार्क्सिस्ट, फंक्शनलिस्ट, ये सब उसी का पार्ट है, राइट? उसी से भी क्वेश्चन आते हैं। देखो 21 में अप्रोचेस से 3 आए हैं, इधर भी आया एक, इधर से एक, 21 में और इधर से, राइट? सो अप्रोचेस बहुत इंपॉर्टेंट है, 4-5 अप्रोचेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा नहीं है। नाउ की कॉन्सेप्ट से कभी कभी जैसे नेशनल इंटरेस्ट 22 में आया, 16 में आया, यानी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 22 में आया, अब आएगा 26-27 के आसपास। हाँ, ऐसा नहीं कि मैं कह दिया तो मेरा वर्ड ऐसे लिख लिया आप लोगों ने, 26 से पहले नहीं आएगा, नहीं, दैट मे अपीयर, बट वी आर जस्ट प्रिडिक्टिंग, होता है ना, देखकर क्वेश्चन देख करके पता लगाना, राइट? ये एक 14 में पूछा, उसके बाद आगे ना पीछे। लुक एट बैलेंस ऑफ पावर से 22 में आया है, 20 में आया है, 19 में आया है, 16 में है, तो जितने भी की कॉन्सेप्ट है उसमें बैलेंस ऑफ पावर इज अ मेजर पार्ट, ठीक है? डेटरेंस 2019 में आया, उससे पहले नहीं आया। एक्टर के बाद होती है एमएनसीज, टीएनसीज, 18, 17, 14, 18 के बाद नहीं आया है, ठीक है? तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि आने की, राइट? नाउ लुक एट कलेक्टिव सिक्योरिटी, कैन वी गिव वन मोर डे टू एनालाइज सेकंड पार्ट? ठीक है, सो दैट would be, that is very important. So on Monday we will talk about second part of
that syllabus. ठीक है. Meanwhile, let me tell you what you need to read. ठीक है. किताब के अलावा आपको क्या क्या पढ़ना है, राइट? पहले इसको देख लेते हैं. सिक्योरिटी, कलेक्टिव सिक्योरिटी से 22 में आया है, उसके बाद आया है 20 में, उससे पहले नहीं आया. इकोनॉमी से 17, उसके बाद 22. नाउ इफ यू लुक एट राइज ऑफ सुपर पावर से ज्यादा आता है. यूएस यूएसएसआर से रिलेटेड सवाल ज्यादा आते हैं. Now still USSR are very important because USSR is engaged in war. Russia is engaged in war with Ukraine, and USSR play a very vital role in both the war. Let me tell you, in both the war, in Russia-Ukraine war as well as in Palestine and Israel war. Right now, if you look at the US and UK had attacked Houthi rebel group. You know Houthi rebel groups? ठीक है, ये यमन का ग्रुप है. It is backed by Iran. है ना? It is attacking, ships, including India's ships had been attacked, right? तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है. जब आप पढ़ते रहोगे, ट्रेंड फॉलो करते रहोगे तो इंटरेस्ट लगेगा. नहीं एक दिन में तो फिर पता नहीं चलेगा. मान लो कि आपको पेपर पढ़ ही नहीं रहे, तो किसको हाउथी पता है? नहीं पता है. बगल का रेस्टोरेंट पता है, खाना खाना है बस आराम से, राइट? एनीवे, सो राइज ऑफ सुपर पावर से हर साल देखो ना क्वेश्चन आ रहा है. हाँ, ठीक है. सो थोड़ा सा एनालाइज करो. नॉन अलाइनमेंट से बहुत सारे सवाल आते हैं. 20, 18, 19, 17. इंडिया नाम भी है सेकंड पेपर पार्ट में, उससे भी आता है क्वेश्चन. सो यूनाइटेड नेशन से हर साल करीब करीब एक सवाल आता है, राइट? नाउ लुक एट द इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम. हर साल क्वेश्चन आते हैं, राइट? 20 में 2 आया है, 19 में 1 ही आया है, राइट? नाउ 16 में 1 आया है, 15 में 1 आया है, राइट? नाउ लुक एट यूनाइटेड नेशंस. यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं, राइट? यहां पर क्या था? सॉरी, ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था. मैंने यूनाइटेड नेशन से यू कैन फाइंड देयर इज अ क्वेश्चन, राइट? 22 में, 21 में, 20 में, 19 में 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आए. लुक एट 3 क्वेश्चन आया. पढ़ो तीनों क्वेश्चन अलग अलग किस तरह से ये पूछ रहा है. एक ही, राइट? एक पूछ रहा है, इन व्हाट वे डज द प्रीडोमिनेंस ऑफ द यूएसए इन द यूनाइटेड फंडिंग अफेक्ट इट्स डिसीजन मेकिंग. सेकंड पूछ रहा है, डू यू थिंक दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर रियली अटेनेबल बाय 2030? राइट? पूरा हाँ या ना, केवल हाँ भी नहीं करना है, केवल ना भी करना है. यू हैव टू एनालाइज. ठीक है, what are the advantages, how many countries have done it, right? क्या achievement है, you can cite India as an example. ठीक है, and what are the challenges to attain sustainable development goal. तो ना नहीं कहना है, हाँ नहीं कहना है, gray area रहे, right? So you have to analyze, right? Be analytical, right? Evaluate the role of International Court of Justice in interstate disputes. Fine. So you read it. Let me 10 minutes. Let me focus on 10वां है. Look at regionalization of politics. Every time there may be a question on EU, on ASEAN, right? On Brexit, on SAARC, on NAFTA, right? Every time there may be a question. Every time. ठीक है? तो थोड़ा ये दिमाग में आ गया कि क्या क्या है क्लास, सवाल क्या है, सवाल कैसे आता है, राइट? एक टॉपिक है, उसके सब टॉपिक्स हैं, राइट? और सब टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, राइट? लुक एट कंटेम्परेरी ग्लोबल कल्चर, डेमोक्रेसी है, ह्यूमन राइट्स है, इन्वायरमेंट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं. देखो, राइट? जेंडर जस्टिस से कम आते हैं. उसके बाद टेररिज्म से 22 में आया, उसके बाद 14 में आया. तो इस तरह से हाँ, पढ़ना क्या है, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन से 18 में आया था, 17 में आया था, 16 में आया था, उसके बाद नहीं आया है. अच्छा, पढ़ना क्या है कॉम्पैरेटिव पॉलिटिक्स में? एक किताब है सुब्रता मुखर्जी एंड सुशीला रामास्वामी का, कॉम्पैरेटिव पॉलिटिक्स. यू बाय इट, इट्स अ गुड बुक. एंड ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एंटायर बुक इज नॉट रिकमेंडेड. बाय स्मिथ एंड ओवेन, ये भी ओयूपी का है.
राइट। एंड्री ह्यूड का है ग्लोबल पॉलिटिक्स, राइट। एक है गोल्डस्टीन, पी गोल्डस्टीन, उसका किताब का नाम है इंटरनेशनल रिलेशन। राइट, पियर्सन पब्लिकेशन का है ये, गोल्डस्टीन का। जोशुआ गोल्डस्टीन, ये किताब देख लो, रेड कलर का है, ठीक है। इसका नाम है जोशुआ कोहेन, कोहेन नहीं, जोशुआ गोल्डस्टीन, राइट। पियर्सन, पब्लिश्ड बाय पियर्सन। मैं बहुत पुराना था ये किताब, जब फर्स्ट एडिशन आया था 2013 में, तब मैंने पढ़ा था इस किताब को। इट्स अ गुड वन। नाउ लुक एट दो टू पर्सन हैव, दो लोगों ने, ये किताब आप खरीद लीजिएगा, इंटरनेशनल रिलेशन, राइट। पियर्सन पब्लिकेशन है। नाम क्या है? जोशुआ एस कोहेन, जे एस कोहेन, जेस गोल्डस्टीन। एस्टीन का स्पेलिंग ऐसा नहीं है जैसे मैंने लिखा, STEIN है। जोशुआ एस गोल्डस्टीन, इंटरनेशनल रिलेशन, वेरी गुड बुक, ठीक है। बहुत अच्छी किताब है, लगता है मुझे, मैं भी खरीदूंगा, बहुत दिन हो गया। आई रेड इट इन 2013 अराउंड, राइट। उसके बाद क्या है, तो स्टैटिक तो मेरे दिमाग में ऑलरेडी है, राइट। अब मैं क्या पढ़ता हूं, मैं जो न्यूज़पेपर पढ़ता हूं, ताकि उसको कवर। सो इंटरनेशनल रिलेशन के लिए आप ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, बहुत अच्छी किताब है। पैलिस स्मिथ एंड ओवेन, तीन लोग लिखते हैं। मैं जब लिया था तो दो ही लोग लिखते थे, अब तीन लोग हो गए, इसमें भी एक और लोग जुड़ गया, राइट। मुखर्जी एंड सुब्रता, इट इज ऑल्सो न्यू बुक, राइट। एंड्री ह्यूड का ग्लोबल पॉलिटिक्स, these three are very very important, right? The rest we will provide, ठीक है। हम लोग नोट्स देंगे आपको, we provide you notes, but इंटरनेशनल रिलेशन थोड़ा आपको भी और किताब में भी पढ़ना है, क्या हुआ नहीं, बहुत फैक्ट्स हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में। we will give you पर्सपेक्टिव, क्या हुआ नहीं हुआ, बट थोड़ा आपको और पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, समझ में आया, राइट। क्योंकि आप देखेंगे कि ये 2 महीने में खत्म हो जाएगा, है ना, है ना। बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान और इंटरेस्टिंग तब है जब आपको बहुत सारे फैक्ट्स पते हैं, राइट। आपको पता है कि अच्छा न्यूक्लियर वेपन किसने शुरू किया, उसके बाद किसने किया, उसके बाद किसने किया, 1968 में क्यों लाया न्यूक्लियर वेपन, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी अमेरिका, राइट। अमेरिका को क्या पता लग गया कि वो उसने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ले आया, राइट, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इस सब किताब में है, स्पेशली गोल्डस्टीन बहुत अच्छी किताब, ठीक है। तो अच्छा, और क्या आप करना है, आपको सनसेट टीवी देखना है, सुना है, सनसेट टीवी में प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम है डिप्लोमेटिक डिस्पैच, इसमें बहुत सारे एपिसोड्स हैं, बहुत सारे रिलेशंस के ऊपर, इंडिया जापान। अगर आप एक एक दिन में एक एक कर लेते हैं, आधे घंटे का एक एपिसोड है। इफ यू मेक 2 pages नोट्स ऑन each relationship, इंडिया जापान, इंडिया यूके, इंडिया यूएस, इंडिया अफ्रीका, राइट, इंडिया चाइना, इंडिया फ्रांस, अगर आप कर ले तो ना, बता रहा हूं, each day
होता है ना, खाना में होता है ना, थोड़ा थोड़ा डेली डेली खाना है। ये बहुत सारे मैंने एग्जांपल दिए हैं। देयर आर मल्टीपल एपिसोड्स ऑन डिप्लोमेटिक डिस्पैच। ठीक है, संसद टीवी शुड बी योर नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स होता है ना जब हम बहुत एक्सप्लोर संसद टीवी, देयर आर मल्टीपल यू नो थिंग्स। एक एक एपिसोड है डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड। मत सोचना कि सर यही देखते रहूं क्या, नहीं ऐसा नहीं है। 1 hour you should watch Sunset TV. Apart from it, there are so many news regarding polity. There are so many news regarding geography, economy, right? Government policies and programs, governance. You should watch it. Let me tell you, it will help you a lot. Every year, 3 PT questions, you can, 3 or 4 PT questions, you can solve easily. Miscellaneous questions. If you have seen the, videos, several videos of, छूट जाता है बच्चों से, गलती करके आते हैं, राइट? बच्चे फॉर एग्जाम्पल पिछले साल का पीटी टेस्ट देखा, पीटी देखा नहीं देखा? एक क्वेश्चन था नेशनल फ्लैग के ऊपर, नेशनल फ्लैग का जो शेप एंड साइज है उसका रेशियो 2 दे दिया, रेशियो ये दिया है, एंड व्हाट आर द फ्रेम्ड थिंग्स इन नेशनल फ्लैग एक्ट 2002। सबका 3 4 ऑप्शन दिए, चारों ऑप्शंस में एक ऐसा, सॉरी 4 ऑप्शन दिए, 1 2 3 4, और एक ऑप्शन ऐसा दिया 2/3 तो है लेकिन वो एक्ट में नहीं है। बच्चे जब मेजर करें 2/3 है बट एक्ट में नहीं है। ये तीनों है, ये सब 2/3 में है बट एक्ट में है, राइट? हाँ, ये तीनों अलग अलग है। बच्चों ने ये मारे, गड़बड़ हो गया, पता लगा कि ये है, नहीं है। ठीक है, तो एक प्रिजन के ऊपर आया था सवाल, राइट? प्रिजन रिफॉर्म एक्ट, प्रिजन रिफॉर्म के ऊपर। तो अगर आप सनसेट टीवी देखेंगे तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, फॉर न्यूज़पेपर यू रीड द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस, दोनों। इसमें ओपिनियन पेज, वर्ल्ड अफेयर एंड एक्सप्लेन, ये 3 पेज देखना है इसमें। These 2 newspapers you should buy early in the morning every day. Right? Rest we are here to help you a lot. दोनों। हिंदू को थॉरली पढ़िए, ठीक है, इधर से उधर। अब किसी का बकरी मर गया, किसी का गाय मर गया, वो तो पढ़ना नहीं है। Have to read national, international, economic, right? थीम बेस्ड पढ़ना है। इंडियन एक्सप्रेस में 3 चीज पढ़नी है, ओपिनियन पेज, वर्ल्ड अफेयर्स एंड एक्सप्लेन, 3 चीज, बट दैट इज मैंडेटरी। फाइन, सो आज यहीं तक, मंडे वी विल मीट, राइट? मीनवाइल आई विल सेंड यू दिस, रीड इट, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से देखिए, अच्छे से सवाल देखिए, सवाल क्या आया है, क्यों आया है। मान लो एक थीम है, उसके 4 सब थीम है, क्या चारों सब थीम से क्वेश्चन आ रहा है या 2 ही सब थीम है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी चेक करना है आपको। समझ में? इट्स कॉल्ड इन्वेस्टिगेशंस, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस। सो यू डू इट, सी यू। सारा गोल्ड स्टीन्स खरीद लेना, एक छोड़ देना भी। अगर मैं बोलोगे कि सर तीनों में से कौन अच्छा कर दे, तो मैं बताऊंगा गोल्ड स्टीन खरीद लो और ये सब छोड़ दो, राइट? एक तो पढ़ो कम से कम, स्टार्ट विद गोल्ड स्टीन। हाँ, कंपैरेटिव खरीद लीजिए, खरीद लीजिए, मत खरीदना है मत खरीदिए। हम लोग और
हाँ तो मत पढ़ो। बहुत मैंने बोला कि अगर आपको खरीदना है आईआर में खरीद लो, अभी मत पढ़ना, अभी मत पढ़ो, बाद में पढ़ना, जब पढ़ना तब खरीदना। कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में खरीदने की जरूरत नहीं, पॉलिटिकल थियरी में खरीदने की जरूरत नहीं, डब्ल्यूपीडी में कुछ लेने की जरूरत नहीं, आईआर में खरीद लीजिए, राइट। और ये पढ़ते रहिएगा, ये सब देख करते रहिएगा, ठीक है। चलो आज यहीं तक, मिलते हैं मंडे को।